Hello my friends, how are you doing today? मैं हूं आपका रमनदीप सिंह back again with another important cue card of files and this cue card was on list for a very long period of time. Let's quickly check out what the cue card is before I share the sample answer and discuss the ideas about this cue card. The cue card is talk about an interesting lecture or speech you heard. इसके cues हो सकते हैं when it was, where it was, who delivered the speech, why it was so interesting, or what the speech was about and why you found it so interesting. So obviously बहुत सारे स्पीच हम अटेंड करते हैं अपने लाइफ टाइम में. आजकल तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी देखते हैं. अगर आप किसी एक बंदे की मिस कर रहे हो अभी तक, ज़रूर देखो संदीप माहेश्वरी. ही इज़ जस्ट अमेजिंग गाय. संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल स्पीचेस आप ज़रूर देखा कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है. अभी मैं एक बात करने वाला हूँ मिस्टर सिंह की, क्योंकि मैं मिस्टर सिंह की बात ज़्यादा करता हूँ. तो क्या कहेंगे, इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हमारे सिटी काउंसिल ने सेलिब्रेट किया एनवायरनमेंट डे. आपको रियलाइज़ हो जाएगा मेरे 2-3 क्यू कार्ड अभी सेम ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर क्यू कार्ड के लिए एक नया आइडिया सोचने की मेहनत नहीं करता हूं. और यही चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए मैंने इसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश की है इस क्यू कार्ड में भी. हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट डे को ध्यान में रखते हुए हमारे सिटी काउंसिल ने एक सेलिब्रेशन की, जो की गई हमारे एक सिटी के पार्क में, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिवेलर्स वहाँ पर पहुँचे. डिवेलर्स मतलब सिटी के रहने वाले लोग. तो यहाँ पर रेनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर सिंह को इनवाइट किया गया टू डिलीवर अ स्पीच, ताकि वो लोगों को इस बारे में कुछ बता सकें. उन्होंने अपनी टॉक जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव थी, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जिससे लोगों को समझ आए कि ये प्रॉब्लम कितनी स्वेयर है ग्लोबल वार्मिंग की. उनका डिलीवरी का स्टाइल, उनकी ल्यूसिड, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज हर किसी को समझ आ रही थी. हर एक बहुत ध्यान से उनकी बात को समझ रहा था और सुन रहा था. बाय द एंड उन्होंने कई सारे सिंपल सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए. फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया, वो बताया कि ऐसे ऐसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी उनकी टॉक. बाय द एंड उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट भी किया कि वो उनके गो ग्रीन क्लब को ज्वाइन करें, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें एज अ वॉलंटियर. एंड सिंस मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था इस टॉक से, तो मैंने इमीडिएटली वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया. एंड दिस इज़ हाउ वी विल से कि ये टॉक काफ़ी इम्प्रेसिव थी. तो आइए शाउट आउट की बारी है. तो आज का ये शाउट आउट जाता है वीर पाल के लिए, जो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम आना चाहिए. आई होप यू आर हैप्पी नाउ, बिकॉज नाउ योर नेम इज़ हियर ऑन द वीडियो. एंड ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए मेरे साथ. कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोज़ एंड शेयरिंग योर कॉमेंट्स एज वेल, एंड दिस इज़ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. I request you to please subscribe my channel if you have not done it yet, and let's go ahead and start the sample answer to this cue card. तो हम कोशिश करेंगे इस क्यू कार्ड के सैम्पल के बाद थोड़े से फॉलोअप क्वेश्चंस भी करें इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड. सो इसका सैम्पल कुछ ऐसा होगा. Well, I have heard many motivational speeches and interesting lectures on different occasions, and I would take this opportunity to talk about one interesting speech delivered by Mr. Singh on Environment Day. Actually, last year, the City Council decided to celebrate this day, and an event was organized at Nature Park of my city that thousands of city dwellers attended. And at this event, Mr. Singh, a renowned environmentalist, was also invited to deliver a speech to aware people about the growing environmental concerns. Mr. Singh got onto the stage and he started his speech in a very interesting manner. He shared some interesting facts and figures to make people realize the gravity of this problem. His presentation skills were really amazing. He kept the audience intact throughout the speech with his simple to follow language and interesting examples. After discussing the environmental problems, he shared some very easy to follow solutions to contribute to save the environment. For example, he suggested people to reduce electricity consumption, avoid using plastic bags,
reuse the water at home, especially the water that gets wasted because of water filters in every house. And by the end of his talk, he requested everyone to join his environmental club, Go Green, so that they could actively participate and save the environment. I was so much impressed with his lecture that after listening to his speech, I immediately signed and joined this group as a volunteer. Overall, I can say Mr. Singh's simple language and effective style of presentation made this speech extremely impressive and interesting for the audience. एंड दैट्स इट। ये था हमारा आज का सैम्पल आंसर। आइए वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसके साथ रिलेटेड कुछ फॉलोअप जो हो सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं विद सैम्पल आंसर्स। What skills are required to be a public speaker? As far as I can understand, to be a good public speaker, there are a few skills that are very much important. For example, first of all, a person has to be very confident and should have the courage to face the public. At the same time, he should have the command over the language so that he could convey his message to the public comfortably. How important is for everyone to have public speaking skills? Well, some people keep the idea that public speaking is only for public figures, but I think it is an everyday activity and a skill that everyone must have. We use this skill when we meet new people in social meetings, in business meetings, and at other places. For example, if I'm traveling, I'm sitting in a bus and someone sits next to me, talking to a stranger is also a part of public speaking. So that's why I consider it is must for everyone to have the skill of public speaking. What things a person should keep in mind before delivering a speech? That's an interesting question because people commit terrible mistakes while delivering a speech. So what they should do before delivering the speech is that they should practice a lot. Another thing is that they should be well aware about the audience and use their language keeping the audience in mind. Lastly, a good speaker must include some interesting example or some interesting facts in his speech to keep the audience intact. Should schools invite motivational speakers? Oh, that would be a great idea because we see these days youngsters sometimes feel very stressed and depressed because of study pressure. Sometimes they could not achieve or keep up to the expectations of their parents, so they feel very low, and a motivational speech session really can boost their confidence and their morale. So I think it is very important for schools to organize such lectures. And that's it. तो ये थे कुछ follow-ups जो इस question के साथ related हो सकते हैं और students ने share किए हैं। अगर आपको भी कुछ और questions पता लगते हैं तो please मेरे साथ share कीजिए so that I can help you more and more in your IELTS preparation. I, Ramandeep Singh, say you goodbye right now and I will catch you very shortly in my more IELTS related videos. Till then,